My dear students, ladies and gentlemen, my dear professionals, my dear future managers of Pakistan, we are here again, once again, to learn what we call are the management skills. And of course, it's a developmental course. In every course, we learn some content. In the last session, we have gone through experiential learning. We've gone through learning through measurement, and we have gone through learning through assessments so that you can make some plans. मेरे नज़दीक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे स्टूडेंट, पाकिस्तान के स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, स्पेशली MBA के स्टूडेंट, अगर आउटस्टैंडिंग नहीं तो कम से कम वेरी गुड कम्युनिकेटर हो. इसीलिए लास्ट सेशन में मैंने आपसे शेयर किया था कि ये स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, जो सेट ऑफ स्किल्स में टॉप पर आती है, एंड यू स्पीक टू एनी मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड, any manager of Pakistan, may it be in Karachi, may it be in Khanewal or Bahawalpur, may it be in Lahore, may it be in Sheikhupura or Chichawatni, any manager working, say, in the banks. देखिए ना, अब बैंक्स तो तकरीबन हर जगह पर हैं. अब अगर वो बैंक, जो पाकिस्तानी बैंक ग्लोबल सिनेरियोज में भी काम कर रहे हैं, तो उनके SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनके प्रोसेस, उनकी क्लाइंटेल, you find them global. Look at the telecom sector. You find international and global companies. अच्छा, अब वो ग्लोबल कंपनी अगर किसी छोटे शहर में, से मियाँ चन्नू में या घोटकी में या चमकनी में, पख्तूनख्वा में या कलात में काम कर रही है, तो उनके SOPs तो वही है ना जो उन्होंने कराची या लाहौर अपने हेडक्वार्टर में डेवलप किए. इंटरनेशनल और ग्लोबल बर्गर बनाने वाली कंपनी, यू नेम इट, वो चाहे कहीं भी उसके SOPs डेवलप हुए, वो जहां कहीं भी उनकी फ्रेंचाइज ओपन होगी, प्रोसीजर्स वही होंगे. एंड यू हैव टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, यू हैव टू प्रेजेंट in that language. Language will be same, presentation will be same. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है और एक्सपेक्टेशन भी है कि बी, इफ नॉट आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड कम्युनिकेटर. देखिए, 10 में से 10 नंबर हमने दिए थे आउटस्टैंडिंग, 9 out of 10 वेरी गुड, रिमेंबर दैट, 8 out of 10 गुड, और 7 out of 10 क्या थे? बताइए जरा, रिकॉल कीजिए. ये स्केल मोर और लेस याद रखिए. 7 का मतलब है एवरेज, और 6 का मतलब ये है 6 out of 10 barely adequate, no good less than 6. और अगर आप 6 और 7 के एरिया में हैं, तो मैं चाहूंगा आप 8 और 9 के एरिया में आए. ठीक है? आर यू रेडी फॉर दैट? तो लास्ट टाइम जब हम बेसिक लेवल प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, बेसिक लेवल कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, फॉर्मल, यानी देखिए क्लास में भी तो उसकी जरूरत है. ये क्लास पढ़ते हुए आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है, डिलीवर करनी है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में भी और जहां कहीं आप काम कर रहे हो वहां पर भी. तो ये तो इमीडिएट नीड है कि बेसिक लेवल की प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन बनाते हुए हमने आपसे 5S शेयर किए थे. क्या थे जरा रिकॉल कीजिए, वो जल्दी से बताइए. डज इट कम इन योर माइंड? नंबर 1, स्ट्रेटेजी. आपके सामने ऑडियंस क्या है? वो ऑडियंस स्टूडेंट हैं, या वो ऑडियंस मैनेजर्स हैं, या वो ऑडियंस मिनिस्टर्स हैं. एक जैसा स्टाइल नहीं होगा. हु आर द ऑडियंस? ऑडियंस हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या ऑडियंस
MBA के स्टूडेंट्स हैं, there has to be some difference. Strategy. Number 2, what is the structure of your presentation? Oral or written, doesn't matter. Structure. और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए हमने ये कहा था, प्लीज एंड एट द हाई नोट. याद है? और फिर while delivering the presentation, support your presentation with evidence. Fact based, statistics based, bar chart based, pie chart based, table based, video based, picture based, base it on the evidence. And then develop your own style. फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा और फॉन्ट का साइज क्या होगा और फॉन्ट का कलर क्या होगा. कंप्यूटर बेस्ड प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना आप. अच्छा, अगर आप पावर पॉइंट नहीं यूज कर रहे, फ्लैश यूज करना चाहते हैं, गुड, एक्सीलेंट. अगर आप दोनों में से किसी चीज को यूज नहीं करना चाहते, तो फिर आप किस तरह से रीड करेंगे अपने माइंड में से? Would you keep notes in front of you? And please don't read line by line. अच्छा नहीं लगता. कुछ चीजें आपको पहले से प्रिपेयर करनी है. Develop your own style. अच्छा, स्टाइल का कोई एक रेसिपी नहीं हो सकती. One size will not fit all of you. You have to develop, but whatever that style is, it should be an enhancing style. ठीक है? और आखिरी चीज क्या थी? कैन यू सपोर्ट व्हाइल क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. मौका दीजिए लोगों को क्वेश्चन पूछने का, फीडबैक देने का, बट यू सपोर्ट एंड यू सप्लीमेंट in such a way that the audience are informed and you are confident to take the offense and the defense. अग्रेसिव ना होइए क्वेश्चन आंसर को हैंडल करते हुए. कोई अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ रहा है, कोई ऑडियंस में शख्स बैठा हुआ आपसे डिसएग्री कर रहा है, लिसन इट विद एम्पैथी, लिसन इट विद रिस्पेक्ट, लिसन इट विद एंड डिफर विद हिम विद रिस्पेक्ट. इसलिए कि you will not like to spoil all your presentation just on the basis that somebody nasty was sitting in your presentation. होते हैं लोग, I agree with you. But you be ready, 5S of presentation. You be ready that if someone who is a hard person, who is difficult to deal with, होते हैं हर जगह, who is a troublemaker, well, then how would you deal with it? ठीक है? So this 5S strategy you would use for the presentations. But before we go to the next topic, before we go to the next skill, before we look towards another skill, recall that strategy which we will use from now on. क्या थी भला, वो याद है? Time for what? What is the knowledge about that skill? We will learn that skill, knowledge of the skill. Then we will measure where you are. We will use some instrument. And then we would like to see that it's time for why. Why this skill is important. And of course, you can improve by going into how. You will apply it. There will be exercises. You will take home. You will go and meet people and you will ask them how they use their managerial skills. You will find one coming up that you will take that exercise, asking questions from the managers, evaluating them, and asking them how they spend their day while performing their job. So you learn from the peers and from the other managers,
and you feel confident that yes, this set of 9 effective management skills are required by all of us. ठीक है? तो कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन, ओरल और रिटन, इसकी बात हो रही थी. How good you are. Where are you? We like to see. Measure it. And measurement tells you at what level you are and how much preparation is required. अच्छा, फिर ये प्रेजेंटेशन जो है जिसके हम फॉर्मल कह रहे थे, इसकी तो जरूरत आपको हर वक्त पड़ती है, लेकिन दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई थॉट कि इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, in the maybe second or third week, you feel the importance of it, that how can you use this strategy right away. तो चलिए फिर आप, my dear students, take a pencil and paper. Once again, measurement. I would like to call you upon sharing with you something out of the communication skill. Using the scale of 1 to 10, you have to evaluate yourself right now how good you are, how effective you are. Are you adequate? Are you good? Are you very good? Are you outstanding? This will give you confidence. And from there on, how do you want to move? How do you want to develop on this skill? Very important skill. ठीक है? कागज और पेंसिल रेडी है? I will read the experiential exercise. Scale is 1 to 10. And for each statement, you give yourself score from 1 to 10. ठीक है? Clear है? Is this clear to everyone? Scale is 1 to 10. Should I repeat that? 10 was for outstanding on that behavior, ability. 9 is very good. 8 is good. 7 is average. 6 is just adequate. और 6 से below, तो फिर आपको याद है, you are moving into the weak areas. Communication skill competency. Basic, formal, student-like communication skill competency. जिसको हमने कहा था ओरल और रिटन प्रेजेंटेशंस. ये तो देखिए बिजनेस स्टूडेंट को तकरीबन सभी क्लासेस में करना होता है. एज ए ऑफिसर एंड एग्जेक्टिव भी आपको ये प्रेजेंटेशंस बनानी होती हैं. तो आर यू रेडी देन? लेट मी रिपीट एंड लेट मी रिकॉल एंड लेट मी स्टेट. I will state and then repeat. Number 1, and again on the basis of scale 1 to 10, please give yourself a score to number 1. How do you organize and present your ideas effectively? Organize and present ideas effectively. If you do it outstanding, 10. If you do it very good, 9. If you do it good, 8. If you're average, 7. If you're just adequate, 6. ठीक है? Week 5. Organize and present ideas orally and in written form effectively. Remember, we learned effectively means if it is written clearly and persuasively. Number 2, कर चुके हैं. Number 1, organize and present ideas effectively. Number 2, understand and detect others' values and emotions. As a manager, I understand and detect others' values and emotions. Scale 1 out of 10. Number 3, I present written material clearly and concisely. I present written material clearly and concisely. Number 4, I listen actively and non-judgmentally. I don't draw judgment right away. I don't draw judgment right away. Let me repeat. I listen
actively and non-judgmentally. Number 5, I respond appropriately to positive and negative feedback. Appropriately. I respond appropriately to positive and negative feedback. Number 6, I'm aware of and sensitive to. I'm aware of and sensitive to non-verbal messages of the audience and of me. दोनों ही हैं इसमें. Let me repeat again. I'm aware of and sensitive to. Aware of my non-verbal messages, sensitive to other people's non-verbal messages. To positive, I'm aware of and sensitive to non-verbal messages. 1 to 10 पे जरा evaluate कीजिए अपने आप को. Number 7, I hold people attention when communicating. देखिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं ना, न जाने आप कहां हैं, लेकिन I'm trying to communicate with you while holding your attention. I hold people's attention when communicating with them. Number 8, I share information willingly. यानी मेरे चेहरे पे तासुर ऐसा नहीं होता कि गोया न चाहते हुए मैं ये काम कर रहा हूं. I share information willingly. Number 9, should I read number 9? Okay, number 9, I express my own needs, opinions, and preferences without offending others. Number 9, I repeat, I express my own needs, opinions, and preferences without offending others. Number 10, I use a variety of e-resources to communicate. Remember I said you are from generation Y. Laptop, iPhone, computer, mobile phone, everywhere. You are connected. I know that. So how good you use e-resources, computer-based resources. I use, statement क्या है दोबारा सुनिए, number 10, I use a variety of e-resources to communicate. Scale 1 to 10, अपने आप को मार्क कीजिए. Be realistic, be honest. It's your evaluation, how good, how very good, how outstanding, how average, how adequate communicator you are. इसलिए कि देखिए आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही इवैल्यूएट कर रहे हैं, खुद ही आपको इंप्रूव करना है. अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी. Ask yourself where I am, what are the secrets of success, and once you know the secrets of success, learn how to speak out. ठीक है, तो स्कोर क्या बना? स्कोर निकालिए, आपका अपना स्कोर. अभी तो हमने आपके कुलीग को नहीं कहा कि वो आपको इवैल्यूएट करे. देखिए वो जब इवैल्यूएट करेगा या करेगी तो फिर क्लियर होगा कि आप अपने आप को क्या समझते हैं और वो क्या समझते हैं. या हो सकता है कि आप थोड़े से शाई हों और कंजर्वेटिव हों और लोग आपको समझ रहे हों कि आप बहुत अच्छे हैं इस एरिया में. तो दोनों ही एडवांटेजेस हैं इस इवैल्यूएशन को खुद करने की और दूसरों से फीडबैक लेने की. अच्छा, फिर एक और बात जो हमने कही थी, दिस इज ए मिरर इफेक्ट. लोग आपको आईना दिखा रहे हैं. अच्छा देखिए, आपका कुलीग, आपका दोस्त, आपका क्लास फेलो, आपका पीयर, वही आपको आईना दिखा रहा है ना, तो परेशानी की जरूरत नहीं है. इसलिए कि द मैसेज इज वी वांट टू इंप्रूव. अच्छा जनाब, तो क्या स्कोर आया फिर? दिस इज कम्युनिकेशन बेसिक फॉर्मल ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल कॉम्पिटेंसी. इसलिए हमने कहा था ना, कॉम्पिटेंसी इज एन इंटर रिलेटेड सेट ऑफ एबिलिटी, योर नॉलेज एंड बिहेवियर. और देख लीजिए इसमें तीनों ही चीजें आ रही हैं. अच्छा जनाब, फिर स्कोर अगर आपने निकाल लिया है तो फिर रिकॉल कीजिए वो
स्केल, टोटल स्कोर इंटरप्रिटेशन का जो हमने शेयर किया था आपसे. If you are below 60, what does that mean? Not effective. Yes, adequate. Okay. Not effective. आपकी सैलरी में 10, 20, 50 हजार नहीं बढ़ाए जाएंगे. उसको मॉनेटरी टर्म में ट्रांसलेट कर लीजिए. आपको सेल्स और मार्केटिंग की जॉब मिलना मुश्किल होगी. आपको कस्टमर रिलेशनिंग और फ्रंट ऑफिस में जो दिन ब दिन इंपॉर्टेंट हो रही है, मुश्किल होगा. थिंक अबाउट इट. रिसर्च की टीम को हेड करने के लिए मुश्किल हो सकता है. बिलो 60, नॉट इफेक्टिव. उससे अगला स्कोर क्या था? 61 to 79. अगर आपका स्कोर 61 to 79 की रेंज में है, ओके, you're making progress. But there's still room for improvement. खुश होना है, you feel happy, but then you have to make progress. There is a room, 20% left over. If you're above 80, congratulations. Help others if you are in the 90 range. इसलिए कि providing counseling and motivating and mentoring others is also one of the excellent management skill. ठीक है? I hope now you know where personal development plan. Recall that where I am now, and in 2 to 3 years, in 6 months, in 1 year, where do I want to be? Gradually, stepwise, वो जो क्वालिटी मैनेजमेंट में हम कहते हैं ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. चॉइस आपका है, लेकिन इंप्रूवमेंट होनी है. मैनेजमेंट स्किल को डेवलप होना है. दिस इज अ स्किल विच यू नीड टू लर्न. What part? This is a skill which you have to understand why it is important. Why part? And you have to measure where I am now, where I want to be in 6 months, in 1 year, in 2 years. And the last part would be how I'm going to improve it. All right? So, this is the understanding of communication skill. I like to take you now and move into the skill set which Cameron and Wheaton has presented to us. And if I move into that area, the first fundamental skill set which is required by all of us, and it is not part of that 9. Notice that? It is not part of that 9. We are calling this a fundamental skill set, a matching skill set. Because if you are a student of business administration, you have to match your skills, skills of your personality, skills required at an organization, and the skills required where you are in terms of the country. ठीक है? इसलिए हम इसको कह रहे हैं फंडामेंटल स्किल. तो कम्युनिकेशन स्किल आपने लर्न कर ली, मेजर भी कर ली, इवेल्युएट भी कर ली, असेस भी कर ली, और उसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझती हैं. We'll come back again and go into depth more in the area of communication. But when we speak of fundamental skills, what we like to understand is, my dear students, we like to understand why are we developing these skills? What is the context? Am I working in district level? Am I working in headquarter level? Am I working in Pakistan? Am I working in manufacturing sector? Am I working in textile sector within manufacturing? Electronic sector, engineering sector, automotive sector, cement sector, sugar sector, manufacturing.
Or am I working in service sector, banks, financial institutions, hospitals, educational institutions? ठीक है? Am I working for a design company? Am I working for an IT company? And at the same time, I should know what country I'm standing in. Is it Pakistan? Is it Singapore? Is it China? Is it Japan? Asia? Or is it Australia or New Zealand? Asia Pacific? Is it Europe or Middle East? Is it Africa or South America? Or is it Europe or North America? I'm taking you from village and tehsil and district to the country and to the world. I like to go around, but you need to understand and match. I'm confident of you. Believe me, I know you can do it. As long as you know your context. So that's why this book is calling fundamental skill. It is required by all of us. And one has to match and understand the fundamental style. That's why we are saying that to develop the management skill, 3 important parameters. Number 1, what is my personal culture? Individually, male and female, culture. I'll speak about the culture in a minute. What is culture? Personal culture. People living in Lahore have a different culture than people living in Karachi. People living in Karachi has a different culture than people living in Peshawar. People living in Lahore has a different culture than people living in Bahawalpur and Multan. Culture. Personal culture. You have to understand the context. Number 2, organization culture. किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं? वो कंपनी लोकल है या ग्लोबल है? वो कंपनी पाकिस्तान की है या इंटरनेशनल है? उस कंपनी के क्लाइंट्स लोकल हैं या यूरोपियन हैं? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. इस कंपनी में सेंट्रलाइज्ड हायरार्की है या डिसेंट्रलाइज्ड हायरार्की है? रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द हायरार्किकल स्किल्स. इस कंपनी में सिर्फ टॉप डाउन कम्युनिकेशन है या बॉटम अप कम्युनिकेशन भी मौजूद है या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन? कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट. और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कल्चर के पर्सपेक्टिव में है वो क्या है? कंट्री कल्चर. किस मुल्क में हैं आप? अच्छा, मैं नया अमेरिका गया तो एवरीबॉडी वाज कॉलिंग मी एंड टॉकिंग विद मी विद अ स्माइल. मे आई हेल्प यू? मे आई हेल्प यू? मैं समझा भाई यहां तो बहुत ही हेल्पिंग हैंड है. हर आदमी, हर शख्स जिस ऑफिस में भी जाए और जाकर, जैसे एक शुरू में आदमी शाई होता है, पूछता नहीं है. आई एम टॉकिंग ऑफ 1973. एवरीबॉडी वाज सेइंग मे आई हेल्प यू. तो मैंने कहा भाई यहां तो हर आदमी हेल्पफुल है. और मैं चूंकि पाकिस्तान के कल्चर से गया था और 1973 में तो इतना हेल्पफुल और इतना एनर्जेटिक प्राइवेट सेक्टर नहीं था उस वक्त. बट देन इट टर्न्ड आउट कि नहीं, ये तो उनकी पार्ट ऑफ जॉब है, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट है. उनको सिखाया जाता है कि एनीबडी हु वॉक्स इन, एनीबडी हु इज लुकिंग फॉर ए some information, break the barrier, ask them, may I help you, with a smiling face. अच्छा, smiling face से मुझे याद आया, Pizza Hut was opening their first pizza store in Russia. Now it's a service sector. Service with a smile. They have to teach and train Russian managers, Russian staff for 3 days how to smile. दुनिया में सबसे मुश्किल कौम है स्माइल के पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा, जापानी दूसरे एक्सट्रीम पर हैं.
वो अपने खास तौर पर रिटेल स्टोर्स में यहां तक वो टीच करते हैं कि आपने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को किस किस्म के स्माइलिंग स्टाइल में किस तरह से मूवमेंट देनी है. सी हाउ फार दे गो. दैट्स हाउ यू डेवलप द कल्चर. अच्छा, कल्चर क्या चीज है? पर्सनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कंट्री कल्चर, फंडामेंटल स्किल. देखिए, वंस we blend all these three cultures together, then we will develop the management skills. Then we will be effective. ठीक है? कल्चर की बात करते हुए, let us stop then and think about it. Culture, which is important for knowing and matching the skills. You know, we people, we humans, we are tribal animals. We like to live in tribes, in communities, in brotherries. We are known. That's a fact. And we humans are humans. So culture is something which is made by the humans. It's a man-made or woman-made. Again, we say it's a woman culture, feminine culture, or a masculine culture. Culture is a fabric which gives meaning to what you talk, what you speak. Culture is how we do and feel and interpret things and actions. Culture is how we do things around here. Culture is how we like to do our work here. At the personal level, how do I feel and how do I do my work? How do I give meaning to what I listen and what I speak and what I see? It has a different symbolic meanings from culture to culture to culture. Red color has a different meaning in Pakistan and a different meaning in Mexico. Black color may have a different meaning in different cultures. You see what I'm saying? So, this is how we do things. It is not a question of right or wrong, but we need to know कि अब बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. हम लोग जब ट्रैवल करते हैं, बैंकॉक से अगर आप आ रहे हैं तो एवरीबडी स्टेइंग इन द लाइन. पासपोर्ट चेक हो रहा है इन द लाइन, बोर्डिंग कार्ड मिल रहा है इन द लाइन, जहाज पे चढ़ रहे हैं इन द लाइन. और जैसे ही जहाज लाहौर एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करता है, बस ऐसे लगता है कि जैसे वो सब भूल गए. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है. दिस इज हाउ थिंग्स आर डन हियर. वी नीड टू इंप्रूव. दैट्स समथिंग डिफरेंट. बट नोइंग, अगर आप लाइन का इंतजार करते रहेंगे तो सारे पैसेंजर आपसे आगे गुजर जाएंगे और आप फिर खड़े रहिएगा. नो एंड फील हाउ थिंग्स आर डन हियर. दैट्स व्हाट कल्चर इज. ठीक है? एट द पर्सनल लेवल भी हमें ये देखना है, और एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी हमें ये देखना है, और एट द कंट्री लेवल भी हमें ये देखना है. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर यह देखने की जरूरत होगी आपको कि यहां रूल्स को प्रेफर किया जाता है या रिलेशनशिप को प्रेफर किया जाता है. अभी मैं उसकी भी बात करूंगा. बट यू मस्ट नो व्हाट कल्चर इज एंड how it affects you and the context around you. But you speaking of the personal culture, what are the different type of personalities you will come into action with? And what is your personality style? आपने पढ़ी होंगी OB के अंदर. There are various types of personalities. For example, personality A versus personality B. Machiavellian personality. Remember that? What would be the culture of the Machiavellian personality? How about self-monitoring personality? So these are different type of personalities. You have to interact with them, and you have to know what is your way of doing things. Learning style.
Would you learn? Would you prefer to learn in the effective mode, or the behavioral mode, or the cognitive mode? What is your culture of learning? Motivational style, आपका अपना कल्चर क्या है? अभी तो ऑर्गेनाइजेशन की हम बात नहीं कर रहे. Do you prefer extrinsic rewards or intrinsic rewards? Do you prefer carrot or stick? पर्सनल कल्चर है ना. किस चीज को आप प्रेफर करते हैं? आपका बॉस किस चीज को, आपका कोलीग किस चीज को प्रेफर करता है? Having this information, so you can match. इसलिए कि दोनों ही अगर स्टिक स्टाइल के होंगे, हेड ऑन होगा. दोनों ही अगर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड के ऊपर फाइट करेंगे, मुश्किल हो जाएगी. You have to find out. Then beliefs and values and intentions. And keeping that in mind, what is my self-concept versus the social concept? ये वो चीजें हैं जो मिलकर कल्चर को डिफाइन करती हैं, रिफाइन करती हैं, नॉर्म्स को सेट करती हैं, और उससे आपको एक मीनिंग मिलता है. Then again, it's time that we would like to measure where you are in terms of the culture. All right, now, you know the knowledge part of the culture. Let's evaluate it. Let's assess it. Let's see how competent you are dealing with culture. ठीक है, scale 1 to 10, कागज पेंसिल ले लीजिए. Scale 1 to 10, I will read the statement. You will evaluate yourself and find out your cultural competency. It's not a question of right or wrong. How can you differentiate among different cultures? And again, culture at the personal level, culture at the organizational level, culture at the country level. Number one, my dear students, are you ready? Number one, I treat people from different cultures with respect. People may be from within the country. People coming from Lahore, people coming from Karachi. People speaking Punjabi, people speaking Sindhi, people speaking Urdu. I treat people from different cultures with respect. Number two, I consider managerial and other issues from a worldwide perspective, to think globally but act locally. I consider managerial and other issues from a worldwide, global perspective, which simply means I look at the global level but act at the local level. Scale 1 to 10. Number three, I work effectively with members from different cultures. Effectively. Number four, I know which culture have the expectations that individuals are to take care of themselves. I know which culture have the expectations that individuals are to take care of themselves. Number five, I like to experience different cultures. Number five, I like to experience different cultures. Remember the scale? 10 is for outstanding, 9 is for very good, 8 is for good, 7 is for average, 6 is for adequate. Number six, I learn from those with different cultural backgrounds. I learn from those with different cultural backgrounds. Number seven, I work effectively with those people from different cultures who value unequal distribution of power in society and company. Let me repeat. I work effectively with those people from different cultures who value unequal distribution of power in society and company. Number eight, I seek to understand and appreciate the characteristics that makes a particular culture unique. I seek to understand and appreciate the characteristics that make a particular culture unique. 1 to 10. Number 9, I possess knowledge that different cultures are risk averse and use rules to minimize trying to deal with uncertainty.
I repeat again, I possess knowledge that what are different cultures which are risk averse and use rules and systems and procedures to minimize trying to deal with uncertainty. यानी आपको इस चीज का इल्म है कि वो कौन से कल्चर हैं जहां अनसर्टेनिटी को अवॉइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स. Number 10, I know how masculinity, I repeat, I know how masculinity and femininity in different societies affect interpersonal relationships. Let me repeat number 10 again. I know how masculinity and femininity, masculine values and feminine values, in different societies affect interpersonal relationships. ये हैं जनाब across the organization, across the country, and across the personalities, even within country. तो टोटल कीजिए जरा. Total score. We are looking for total score by yourself, for yourself. कल्चर को हैंडल करने के लिए आपका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, और स्कोर निकाल लिया आपने. कैसे इंटरप्रेट करेंगे? टोटल कीजिए. टोटल स्कोर 10 स्टेटमेंट हैं, 1 to 10 का स्केल है, रेंज होगी 10 to 100. ठीक है, और वही स्केल रिकॉल कीजिए. बिलो 60 नॉट इफेक्टिव, एडिक्वेट नॉट इफेक्टिव. 61 to 79, okay, making good progress. Making good progress. Keep on doing it. Above 80, congratulations. You have a potential to become an effective manager. Time for why this skill is important. So did you think about it? That why knowing about culture is important? Did you think about it and discuss among your colleagues? Knowing the culture of the company, how things are done here. Knowing the culture of the country, how things are done there. And that reminds me of a novel which was written way back when the US invaded Vietnam. And they used a term talking about that not knowing the culture, how difficult it was for them while working in the Vietnam. So culture is very important. Let us look why it is important for us to know. Number 1, is it individualistic culture or the collective culture? At the personal level, do you like to work alone? Personal culture. Do you like to work alone or do you like to work in groups? Which one do you prefer? Among the countries, is it a individualistic culture country or highly individualistic country or a collective country? Give me a name of a country which is highly individualistic, or names of the countries where culture is highly individualistic, and name of the countries where collective culture is promoted and appreciated. ज़हन में आए कुछ नाम? US, Australia, highly individualistic. Leave me alone, I'll do it. I don't need any support of anyone. It's me. Now, we're not saying right or wrong. You need to know which culture are you working. China, collective culture. Asia in general, collective culture. Pakistan is part of Asia. We prefer more into the collective culture. So, number 1, at the personal level, at the company level, at the country level, do you have this information?
Having this information is important. That's why we are saying to match this skill, knowing this knowledge, having this ability, developing this behavior is important. Now, if you are working in a company, in a country, say Toyota, Japanese company, but having a plant, automotive plant in US, where the culture is individualistic, unless you change the culture of the employees by training, or where the employees prefer working on their own. So cultural importance is important to know. Number two, universalism versus particularism. Very important differentiation. Is it the rule which are followed here, rules and systems, or is it the relationship which is given importance? अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, गलत सही की बात नहीं हो रही. I went to Australia to teach a course. The professor asked me very first question, are you rule oriented or are you relationship oriented? Well, he wanted to know. Well, we're not saying rules are preferred or relationships are preferred. But what important is, you should know how things are done here. One right way versus the relationships and circumstances. Again, in US, one right way, regardless who you are. That is the way to go. Number three, neutral versus emotional. The range of feelings which are expressed. Are you logical or are you effective and emotional? These are two extremes. In between, yes, there are so many, but with whom you are talking? I remember back in the 70s while working in US, they used to tell me very clearly, Rashid, keep your heart at home. Just give us your mind. Just give us your mind. Logic. हम ये नहीं कह रहे, गलत सही की बात नहीं हो रही. We're trying to learn so we can match our skills, we can be an effective manager. Number four, specific versus diffuse. The range of involvement. Formal versus real and personal. Max Weber ने कहा था, I want to develop bureaucracy. Bureaucratic system which should be impersonal. Remember that? Recall that bureaucratic system. Again, we're not saying right or wrong. All what we are learning is we need to know where we are working. और पांचवी चीज जो आपको याद रखनी है, and important to remember for culture, because sometimes countries make and break. Sometimes companies make and break because of the not knowing the culture. I went to Australia, the class was 15 minutes late. I was told you are in Asia. इसका मतलब ये नहीं है कि एशिया में हर चीज, but this is how things are. You are just yourself. साउथ अमेरिका में चले जाएं, हो सकता है मीटिंग 1 घंटे बाद स्टार्ट हो. मिडिल ईस्ट में चले जाएं, पहले 15 मिनट तो वो हालचाल ही पूछते रहेंगे. कैफ हालक, कैफ हालक या आखी, कैफ हालक आलक, फैमिली का क्या हाल है, चाय पियो, बैठो, फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी. Knowing the culture is very important. Chinese culture, they would like to develop relationship for months and years before they make a business deal. You have to learn the culture. पांचवी चीज क्या है जो आपको याद रखनी है? Achievement versus ascription culture. How status and position is accorded to you. Is it based on your accomplishments? Or is it based on your kinship and gender and age? Or is it based on your birth? Or is it based on your school and university? ये जी हार्वर्ड का पढ़ा हुआ है, ये जी फलां फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये जी फलां अकम्पलिशमेंट्स इन्होंने की हैं. Accomplishments versus ascription. It's not a question of right or wrong. So my dear students, learn the culture, how things are done here. You will be comfortable. You will match your skill set, you will be effective. So in all these 5 issues, ingredients are important to learn the culture of person, of country, of company. I hope you will keep that in mind when you move. Time for how are you going to apply this skill
and how are you going to practice it? I leave it to you. Look around the countries, look around the companies, look around the personalities. See how things are done. Adjust yourself. Be a good manager. Be an effective manager. You will be a successful manager. I think you can do it. Can't you? Dear students, ladies and gentlemen, thank you and thank you very much.